All right, I think I am audible to everybody. Okay, I know that it is little late and I'm coming at this hour doing live video, but it was necessary. That is why I'm doing the live actually. And why it is necessary, you'll know in a few minutes. Okay, from the thumbnail itself, I think you have got the idea that what is the news all about, and it's a very important news for all of you. I felt that it is very important to update all of you. I think a couple of students asked me somewhere in the comment section that whether or not Meghalaya is going to adopt NCERT textbooks and NCERT syllabus. क्या मेघालय NCERT textbooks या NCERT syllabus adopt करेगा for next year, that is 2024, and I'm here with your answer. तो मैं आंसर के साथ आज हाजिर हूँ. I was doing a lot of research works actually. मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क कर रहा था इसके ऊपर एक्चुअली, ताकि मैं आपको बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड कर पाऊँ. Okay, so that I am able to provide you very authentic information, a very authentic news, a genuine news, without any without any fake thing. Okay, तो यहाँ पे देखिए कि important discussion. Okay, so we are going to focus basically on one news here, and under those news, the pros and cons, the profit and the loss, that whether NCERT textbooks will be followed in Meghalaya. Okay, will be adopted in Meghalaya. NCERT textbook means NCERT syllabus also. Okay, or syllabus according to the textbooks. And the most important question is, will it benefit students? क्या ये student को benefit देगा? Will it be profitable for the students? And then finally, I'll leave some time in vain hello, and I will be also giving you some time to ask any questions if you have, and then I will be trying my level best to give you the answers. Okay, मैं अपना level best try करूंगा ताकि मैं आपको answer दे पाऊँ, अपनी तरफ से आपको पूरा understanding दे पाऊँ. तो please join the live streaming right now. I will be live only for half an hour. मैं सिर्फ आधा घंटा half an hour में इस live session को करूंगा, क्योंकि the topic is only one. You have seen the thumbnail. The topic is only one: whether Meghalaya will adopt NCERT textbooks in Meghalaya. Okay, whether Meghalaya will whether Meghalaya will adopt NCERT textbooks. And the most important question is, will that benefit the students, or will it be a profit for the students or loss for the students? ठीक है, तो मैं 2-3 मिनट का टाइम आप सब लोगों को दे देता हूँ. आप सब लोग काइंडली मुझे ज्वाइन कीजिए जितना जल्दी हो सके. और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा जो कि 22 दिसंबर को आया है. A very important notification came in 22nd December, that is just a few days back. Today is 27th, so just 5 days back a notification came. Maybe you might have missed, okay, because all of you are very busy in studying, busy in your studies, so you might have missed. I'm here actually, and because I was doing a lot of research, मैंने आपको पहले भी कहा था, I have told you a lot of times earlier also, whenever I make any video, any important news whenever I make sure that I give you the genuine news. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको genuine news दूँ उस, और मैं हालांकि मैं ऐसा भी बोलता हूँ, I often tell you that even if I'm late by 1 or 2 days, that does not matter to me. I'm not here to gain views. I'm not here to gain profits from my channel. I'm here to help you out, and that is why अगर मैं 2-3 दिन लेट भी होता हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देना चाहता हूँ. आई वांट टू गिव यू ऑथेंटिक न्यूज़. ओके, डेनवर हेलो. ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन हियर इज वेदर मेघालय विल अडॉप्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट एंड विल इट बेनिफिट स्टूडेंट्स. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझने के लिए. तो सबसे पहले जो है, मैं आपको जो सबसे पहले दिखाऊंगा वो ये है कि ये न्यूज़ कितना सच है, हाउ फार दिस न्यूज़ इज ट्रू. Okay, the truth of the news is very important, and here comes the truth. तो यहाँ पे सच्चाई सबसे पहले आ जाता है. One of the most trusted newspapers that you have, is the Times of India. सबसे trusted newspaper अगर आप देखना चाहते हैं तो वो है the Times of India. And here if you see the Times of India, okay,
टाइम्स ऑफ इंडिया। सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है टाइम्स ऑफ इंडिया, और सबसे पहला जो यहाँ पे जो हेडलाइन है वो ये है कि मेघालय टू अडॉप्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फॉर एमबोस। ऑब्वियसली वी नो दैट आवर स्टेट एजुकेशनल बोर्ड इज द मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। हमारा जो स्टेट एजुकेशनल बोर्ड है वो है मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, और उसके अंडर ही जो है सारे स्कूल जो होते हैं सेकेंडरी टिल हायर सेकेंडरी, फ्रॉम क्लास 1 टिल हायर सेकेंडरी टिल क्लास 12, वो एम्बोस एजुकेशन बोर्ड के अंदर आता है, मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो कैबिनेट अगर कोई मिनिस्ट्री अगर कोई कैबिनेट अगर कोई डिसीजन लेता है, दैट इज द फ्रॉम द मिनिस्ट्रियल साइड। ओके, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मेघालय, मैं एम्बोस की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली अबाउट द मिनिस्टरियल लेवल। अगर मिनिस्टरियल हाईएस्ट लेवल, ओके, मिनिस्टरियल लेवल से अगर कैबिनेट से अगर कोई न्यूज आता है तो, एंड इफ अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, दैट नोटिस हैज टू बी फॉलोड बाय द स्टेट बोर्ड आल्सो। अब मेघालय टू अडॉप्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फॉर एम्बोस। नाउ हियर the news here is that the Meghalaya cabinet made a crucial decision to enhance the educational system in the state by adapting NCERT, that is National Council of Educational Research and Training books for classes 1 to 10 in the Meghalaya Board of School Education courses on Thursday। तो थर्सडे को उन्होंने, एक्चुअली ये बहुत दिन पहले का न्यूज है, ये बहुत दिन पहले का न्यूज है, तो ऑन अ पर्टिकुलर थर्सडे, ओके, दिस पर्टिकुलर न्यूज वाज पब्लिश्ड कि क्लास 1 से लेकर 10 तक इन मेघालय, Meghalaya is going to adopt NCERT textbooks. This will ensure that local content are based on culture, history, uniqueness, and these aspects are not diluted. So, सबसे important, the most important fact, the most important thing here, if they adopt NCERT textbooks, is that the local content will be there. The local content will be there. Say, for example, this is Tura, West Garo Hills. Okay, so culture, history of Garo Hills. Khasi Hills, culture, history of Khasi Hills, culture, history of Jaintia Hills. In fact, the culture, the history of Meghalaya in entirety will be there in the textbooks. And in this way, our children will be able to learn about the history, the background of the state. It is very important to know, okay, the history and background of the state, which right now, I think we're not lacking. I won't say we're lacking. The government is trying the best on its side, and I must applaud the government for trying its best to enhance the education system, and this is one of a very crucial step actually. Okay, ये बहुत एक crucial step है. What about class 11 and 12? 11 and 12 in the sense, Denver, you are talking of adoption of NCERT textbooks. Okay, right now the news is from 1 to 10. Okay, classes 1 to 10 right now जो है 1 to 10 तक ही ये information आया है डेनवर। It has come till class 1 to 10 only. Regarding 11th and 12th, I think maybe you have not followed that part. Okay, I'll just tell you what. Class 11 and 12 is already following NCERT textbooks. Class 11 और 12 already NCERT textbooks, NCERT pattern of textbooks already follow करता है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक देखिए एक बार, इफ यू जस्ट लुक एट योर टेक्स्ट बुक, इंग्लिश, एडिशनल इंग्लिश, आई डू नॉट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, ओके, सो फॉरगिव मी प्लीज, क्लास 11 and 12 I do not know about other subjects, but regarding English and additional English, if you open your textbook, you'll see it follows the NCERT book only, so it does not. So class 11 and 12, yes, Denver, okay, thank you for asking, okay, and so you see class 11 and 12 won't come in this particular frame. ओके, इस फ्रेम में क्लास 11 12 नहीं आएगा, तो 1 से 10 तक ही ये चेंज होगा। नाउ हियर यू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस डिसीजन विल आल्सो एंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट इज ऑन a par with the rest of the country and allow students to compete at the national level. See, the entire country follows NCERT textbooks. पूरे country में NCERT textbooks चलता है। I guess it will be better if we adopt NCERT because there are less resources for MBOSE students, and in Meghalaya adopt NCERT, we would have numerous ways to learn and understand a chapter. That is absolutely correct in vein 7. Yes, absolutely correct. I will definitely tell that in vein, who has commented here, has given a very crucial comment. एक बहुत crucial comment in vein ने यहाँ पे दिया है, and I would really appreciate. Okay, and this is what I'm talking about, and I'm going to go in detail little bit more also here. मैं थोड़े डिटेल में और भी जाऊंगा। तो पूरे कंट्री में जो है, पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चलता है।
एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप सब लोगों को पता है वो क्या है, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. दिस इज बेस्ड ऑन NCERT बुक्स ओनली. Now, if a student is studying from class 1 to class 10, if a student is studying other books and not following NCERT books, only in class 11 and 12 they are following NCERT textbooks. Those 2 years are not sufficient. वो 2 साल बिल्कुल sufficient नहीं होते. If students learn from the ground level itself, एकदम बचपन से अगर वो लोग NCERT textbooks के pattern follow कर करके, by following the NCERT textbook patterns starting from class 1 itself, till class 12, if they move on, then what happens is that they will be able to compete in any national level exam. This is what the view of our honorable chief minister Conrad K Sangma is, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मेघालय के स्टूडेंट्स हैं, ये जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने बाहर जाते हैं तो ज्यादातर जो होता है वो फेलियर ही होता है. मैक्सिमम इट इज लाइक फेलियर काइंड ऑफ थिंग. इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इज नॉट anybody's fault basically. Okay, it is not anybody's fault. Okay, no government in the country actually wants student to any student or students to fail. Every government, whichever government has come, every government has tried their its own to the best of its own capacity to do the best, okay, regarding education. Okay, some have succeeded a little bit more, some did not succeed, but that does not matter. Okay, so here what our honorable chief minister of Meghalaya, Conrad K Sangma ji, has said is that the most crucial point here is competing in the national exams, and that can only be students can only be successful agar if they follow NCERT textbooks, and that is what our honorable chief minister is doing here. So I would really like to congratulate our CM sir for finally adopting the NCERT textbook. So here you see Chief Minister Conrad K Sangma said the adoption of NCERT books was needed since a large number of textbooks were lengthy. This is one of the most important reasons that most of your textbooks, the lessons in your textbooks are too much lengthy, unnecessarily lengthy. I have seen that. Denver is asking something, sir, can you make separate videos in which school should be taken admission in school after 10th science? Okay, Denver. Yes, I also think it would be better to, because all competitive exams follow NCERT. Yes, Denver, that is exactly correct. And you're talking about a video, requesting a video to make. I'll definitely do that. Okay, I'll definitely do that after doing some research work. Okay, so here you see that he said that this will allow concise textbooks. Concise means short. तो यहाँ पे concise का मतलब है short textbooks to streamline studies and make students efficient. This is the most important thing. Lengthy chapters, lengthy lessons will not be of any help. Concise chapters, short chapters, but chapters containing all the informations. छोटा चैप्टर है लेकिन चैप्टर्स में सारी इंफॉर्मेशंस है. That will लेसन द बर्डन. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और मैं एक एक करके पॉइंट आप सब लोगों को बताऊंगा. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू मेक इज द व्हाट इज द प्रॉफिट. लॉस तो मैं बिल्कुल नहीं देखता. आई डोंट फाइंड एनी लॉस हियर. व्हाट इज द प्रॉफिट? यस, लॉस इज देयर. आई विल डिस्कस द लॉस लेटर. लेट मी talk about the positive side first. Profit is that competing in national exams. Competing in national exams, any national exams. I have given you one example of CUET. Competing in any national exams will become easy. जैसे कि CUET, so competing in any national exams will become absolutely easy for the students. Why? Because they are already following NCERT textbooks. So when students from the grassroots level, I mean from class 1 till class 12, when they are habituated in studying the NCERT textbooks, it becomes easier for them to crack any national exams. उनके लिए बहुत easy हो जाएगा कोई भी national exams crack करने के लिए, crack करना, right? Second is that the textbooks will be not lengthy. Okay, textbooks, lessons or chapters will be short. बहुत छोटे होंगे, and that will again lessen the burden.
ये इसका बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? इट विल रिड्यूस योर बर्डन, ये आपका बर्डन रिड्यूस करेगा, रिड्यूस योर बर्डन, ये आपका बर्डन बहुत हद तक रिड्यूस करेगा। आई एम टॉकिंग ऑफ क्लास 1 to 10 राइट नाउ, आई एम टॉकिंग ऑफ क्लास 1 to 10, नॉट 12, ओके, नॉट 11 12, 1 to 10 बेसिकली। तो ये आपका बर्डन बहुत कम करेगा, इट इज गोइंग टू रिड्यूस योर बर्डन मोर एंड मोर, राइट और रॉन्ग? And there is one more thing that I would like to tell you, that cost of the books will also come down. This is my idea. Okay, I've generally seen NCERT textbooks, the price, the cost of the textbooks, the price of the textbooks are very less. So cost of books will be less. It will save money also. Cost of books will be very less. So it will save more and more money also for all of you. I think there is no loss for NCERT students. Denver, exactly that is the point that I was trying to make actually. There are hundreds of profits but no loss actually. And now if you try to look about loss, then I can tell you one loss, and that loss is very minimum. That loss is very minimum. How? I'll tell you that. Anyways, so the first point is competing in national exams, textbook lessons, chapters will be short. It will reduce your burden. पहले आप 10 पेज के या 8 पेज की या 5 पेज के कोई लेसन चैप्टर पढ़ते थे, अब वो चैप्टर जो है वो कम हो जाएगा। एक पेज या 1.5 पेज also if it gets reduced, it is going to reduce your burden. Questions आएगा, to the point questions. And one more thing, let me tell you students, study materials, you will get graded study materials, you will get study materials online, भर के आपको मिल जाएगा, and that will be produced by the government only. ये गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करेगा। अगर आप अभी देख ले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स लाइक सीबीएसई, अगर आप देख ले तो भर के मटेरियल भरे पड़े हैं, वो आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन you'll get, and that will be those graded materials will be provided by the government. और मैं तो हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, I'm already there to give you information. So these are all the important things that are going to help you. And one more thing that I must mention here is that knowledge. The knowledge that you will get from NCERT, I'm not trying to tell that now you're not getting knowledge because government is not following NCERT textbook. That does not mean that you're not getting knowledge now. You're getting knowledge, but when you study the NCERT textbooks, you get a very precise understanding of the chapter. Exactly आपको जो चाहिए आपको वही मिलेगा। Okay, did MBOSE take the decision about the compulsory subjects? Let us know which subject is supposed to be compulsory, sir. Any idea? Are you talking about class? Are you talking about class 1 to 10? NCERT textbooks, SMM. Okay, so knowledge factor will be available there because whatever you need, you will get only those informations only. आपको जो भी चाहिए आपको वही informations आप सब लोगों को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बोलना चाह रहा था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक एक्चुअली। ठीक है, शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे और देखते हैं कि और ओके, ऑलराइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बहुत मदद करेगा। ओके, कॉम्पिटिंग इन नेशनल एग्जाम, टेक्स्ट बुक लेसन्स विल बी शॉर्टर as compared to now. Cost of books will be lesser. Study materials will be provided online only by the government itself, and knowledge factor will be whatever you need, you will get knowledge. आपको जो चाहिए, आपको जितना चाहिए उतना ही मिलेगा आपको। तो ये सबसे बड़ा जो है आपका प्रॉफिट होगा। अगर हम लॉस के बारे में बात करें, if we talk about the loss, there is no loss. As Denver has said that I think there is no loss to follow NCERT. Denver is absolutely correct. There is no loss. कोई लॉस है नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2-3 लॉस में देखता हूं। लॉस इन द सेंस लिटिल बिट ऑफ ट्रबल एक्चुअली। लॉस तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा झमेला है इसमें, थोड़ा सा ट्रबल है इसमें। क्या ट्रबल है? जनरली देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ स्टूडेंट्स, से फॉर एग्जांपल अ क्लास 8 student who got promoted to class 9. Now generally he borrows books from his senior students. He or she borrows books from senior students. एक क्लास 8 का स्टूडेंट जो क्लास 9 में अभी प्रमोट हुआ है,
ठीक है, वो क्या करेगा, किसी क्लास 10 के स्टूडेंट से क्लास 9 का बुक बोरो करेगा. ही विल बोरो from a class 10 student, he will borrow books for class 9, and then after a year he will return that book, he or she will return that book. That is not going to happen here, because right now the fresh students, अगर ये notification एक बार आ गया, I mean if MBOSE changes books, then everyone will have to buy new books. तो सबको जो है नया बुक खरीदना है. Everyone will have to buy new books. तो borrowing books for students will be a little bit of problem. ये students नहीं कर पाएगा. तो every student will have to buy book. हर student को. Grammar is all the same. Mighty blogger Shillong. Hello, good evening, mighty blogger Shillong. Okay. What about grammar and its syllabus for class 9? I'm going to show you Magwitch. Magwitch I will be showing you. Denver grammar is all the same. Grammar is generally the same. Denver is again correct. Denver, you are in which class? आप कौन से क्लास में हैं? ओके, सो बोरिंग बुक्स फॉर स्टूडेंट्स जो है वो नहीं हो पाएगा. इट विल नॉट बी पॉसिबल एनीमोर, सो एवरीवन विल हैव टू बाय न्यू बुक्स. ओनली इन द ईयर 2025 students will be able to borrow books, but for the year 2024, if MBOSE adopts NCERT textbooks, अगर textbook change हो गया, if the textbook changes, then students, everyone will have to buy new textbooks. Okay, but what about the syllabus? Yes, syllabus of grammar, I'll come to that also, Magwitch. I'll come to that also. I'll come to that. There is a very important thing that I'm I'll be showing you a little later. Okay, borrowing books for students will be little difficult. Next, सबसे important thing जो है, क्योंकि because I'm a teacher, so I know 10th. Okay, Denver. Okay, very good. 10th. Okay. Now you see here that, so for this year class 10 students, those who are going to write SSLC board exams next year, for you there is no problem, because your syllabus will remain same, books will remain same. It is only after March, after your metric exam, those students who have been promoted to class 10 next year will have to buy new books, maybe. Okay, I'll be showing you that. Next is problem for the teachers, because we teachers, we have been teaching this book for the last the syllabus changed in 2018, so 19, 20, 21, 23, so last 5 years. So teachers will have to reread, prepare notes, questions and answers, prepare notes, and everything again. तो टीचर के लिए थोड़ा सा झमेला हो गया, क्योंकि उनको पूरा जो है बुक फिर से पढ़ना है, especially for English teachers, because science जो है conceptual, so concept remains same, mathematics concept remains same, so even if chapter changes they will not face much problem, but for English teachers it will be a big problem. English, especially English and additional English, I find for everybody, but especially for English teachers and additional English teachers, it will be a problem. Sir, what do you prefer, JEE or NEET? That's the question running in my mind. I don't know why, but Shillong students don't pursue this. Okay, now you see, both are unique in their own, or both are important in their own fields. Actually, it depends. NEET is for medical, JEE for engineering. Now that depends which profession you'll be following, and on the basis of that only either of the two competitive exams is suitable for you. Okay, AKM, I'm fine. AKM, how are you? So teachers will have to reread, prepare notes again, especially English teachers. तो थोड़ा सा झमेला है, but anyways teachers are there to accept any challenges. ऐसा कोई challenge नहीं जो टीचर मेक ना जो कर ना पाए. ठीक है, माइटी व्लॉगर के सर, कैन यू मेक वन? व्हिच वन आर यू टॉकिंग अबाउट? माइटी व्लॉगर शिलोंग. Pusonbha Riwan, when will this new textbooks arrive in Meghalaya? Okay, that also I'll tell you. Very good question. That also I'll tell you. Okay, so these are the two troubles that I find actually. So you'll have to buy books instead of borrowing. You'll have to buy books. तो बुक्स आपको खरीदना है फिर से, आप बोरो नहीं कर सकते. बाई बुक्स, न्यू बुक्स, ठीक है, आपको खरीदना है. और टीचर्स के लिए थोड़ा सा झमेला है, बट एनीवेज टीचर्स आर ऑलवेज रेडी. एंड यस, वन मोर थिंग, if the books changes, then question paper pattern will also change. So
students who tend to follow previous year question paper, जो students previous year question paper follow करते थे and they used to prepare according to that, that will not be, that option is gone now. Students used to follow previous year question papers, that option is completely gone now, because a fresh syllabus, a fresh question pattern, a fresh book, everything will be fresh, new. So you'll have to start everything, you know, from in a new manner. Okay, आपको जो है पूरे नए तरीके से सब कुछ पढ़ना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज अ लॉस और अ ट्रबल फॉर द स्टूडेंट्स. ये मुझे लगता है. फिर there are many students who used to borrow notes from their seniors. Okay, or take notes, not borrow, take notes from seniors. Questions and answers जो है copies, questions and answers copy जो है, क्वेश्चन आंसर जो है कॉपी वो लोग सीनियर से लेते थे. They used to borrow. That also will not be now. You know, there is no chance now. इसका भी कोई चांस नहीं है अब. ना तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो कर पाएंगे, ना तो आप किसी सीनियर स्टूडेंट से उसका क्वेश्चन आंसर का कॉपी मांग पाएंगे, क्योंकि सिलेबस है चेंज ऑलरेडी. ओके, तो ये कुछ लॉस है, थोड़ा सा ट्रबल है, मतलब मेहनत थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन प्रॉफिट भी तो है. देयर आर प्रॉफिट्स आल्सो, राइट. इसमें प्रॉफिट भी तो है. तो इस चीज के लिए आप लोग थोड़ा सा तैयार रहिएगा. One video important question. So yes, I'll make for SSLC 2024 important videos. Yes, mighty blogger channel. I'll definitely make a video on that also. Okay, and please see my description box. I have provided some websites for you so that you can see. आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए. मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं आपको. चेक दिस लिंक फॉर डिटेल रिपोर्ट करके मैंने दिया है आपको. वहां से ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट मिल जाएगा. यू विल फाइंड द रिपोर्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया. Then the YouTube channel, some YouTube channels also I have given here, where you will find the interview of Honorable Chief Minister Conrad A. Sangma. उनका जैसे नॉर्थ ईस्ट लाइव एक न्यूज चैनल है YouTube पे, वहां से आपको ये उनका इंटरव्यू मिल जाएगी. You will find the interview from there. Okay, and Honorable Chief Minister Conrad A. Sangma said a very beautiful thing, that no compromise on education. एजुकेशन को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. और हमारा स्टेट मेघालय इज वेरी ग्रोइंग स्टेट. ये और आगे बढ़ रहा है और आगे जरूर बढ़ेगा. ओके, तो लाइमलाइट में आना चाहिए, competing in the national exams and all these things. Okay, these are all the things. Okay, now I am going to take you to the page of MBOSE. मैं आपको MBOSE के पेज में लेके चलता हूँ एक बार. ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए MBOSE के पेज को और फिर आप डिसाइड कीजिए कि. तो दिस इज द नोटिस दैट आई वाज टॉकिंग ऑफ. ये वो नोटिस है जिसकी मैं बात कर रहा था एक्चुअली. ये वो नोटिस है जिसकी मैं बात कर रहा था एक्चुअली. ओके, ये मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से आया हुआ है और आप नोटिस देखिए कि इट इज हियर बाय नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन of all concerned that the following textbook shall be followed in all lower primary, upper primary, secondary, that is from class 1 to 10 with effect from the academic session 2024 until further orders. So 2024 से ये बहुत important point है that I am trying to make. Okay, so from class 1 to class 10 for the academic session 2024, that is next year, the following textbooks, below there are the list of textbooks that have been given. That means the news is confirmed, they have already given the textbooks also. तो आप लोग देख लीजिए ये टेक्स्ट आपके करंट टेक्स्ट बुक से मिलता है कि नहीं. एंड दिस नोटिस इज ऑफ 22 दिसंबर 2023. कुछ दिन पहले ही ये नोटिस आया है. दिस नोटिस हैज कम जस्ट अ फ्यू डेज बैक. ऑलराइट, तो बिलो देयर आर द सिलेबस. आई एम डायरेक्टली गोइंग टू टेक यू टू क्लास 10 सिलेबस. मैं आपको सीधे क्लास 10 के सिलेबस में लेके चलता हूँ. आपको मैं दिखा देता हूँ क्लास 10 का सिलेबस. आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि क्लास 10 का सिलेबस आपका सेम है कि नहीं. सो दिस इज क्लास 10. Here you have the mother tongue, which is MIL subjects, first language, Garo, Khasi, Assamese. So these are the name of the textbooks. These are the names of the textbooks. So just check whether these textbooks are your present textbooks or these are completely new textbooks. क्या ये अभी के textbooks है या कोई नया textbooks है? आप इसको देख लीजिएगा एक बार. ठीक है, please see this thing. Then you have Assamese textbooks, Bengali textbooks, okay, Hindi textbooks, Bengali textbooks, Hindi textbooks, Assamese textbooks. These are all your textbooks that have been given. ये आपके textbooks के नाम हैं.
आप लोग यहाँ से देख लीजिए, और अगर नहीं है तो आप लोग खरीद लीजिए फिर। ओके, मार्केट में आना चाहिए। नेपाली टेक्स्ट बुक्स, मीजो, उर्दू, all these list of textbooks have been given. Now let me come to the important point here. Additional English has not changed. Miscellaneous short story is still there, Wings of Poise is still there, A Midsummer Night's Dream is still there. ये आपको नहीं खरीदना है। और होली फेथ एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर कॉम्पिटिशन, ये बुक भी चेंज नहीं हुआ है, तो दीज यू नीड नॉट बाय। ये एडिशनल इंग्लिश स्टूडेंट्स को क्लास 10 और क्लास 10 यू नीड नॉट बाय दिस बुक, दीज आर सेम, ये पूरा सेम है। अब इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज मीन्स हियर इंग्लिश, योर इंग्लिश 1, इंग्लिश रीडर class 10 NCERT Meghalaya edition. Syllabus has not been given, okay, only textbooks have been given. Okay, footprints without supplementary reader in English for class 10. अब ये Oliver Twist तो है नहीं, this is not Oliver Twist. Okay, ये शायद चेंज हुआ होगा, आप लोग थोड़ा खबर ले लीजिए, because English reader class 10, even your class 10 book is English reader only, है ना। आपका जो class 10 का बुक है वो भी English reader ही है, तो वो सेम बुक ही होना चाहिए। बट हियर आई थिंक फॉर योर सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 10, I do not know whether they have I think changed Oliver Twist, because Oliver Twist book is not here. Footprints Without Feet is the name of the supplementary, that is your rapid reader for class 10. So maybe they have replaced Oliver Twist with this book. ये आप देख लीजिए, ये बुक सेम होना चाहिए, ठीक है। और बाकी भी है, you need not check the entire thing because I have given the link in the description box. मैंने description box पे link दे दिया है आपको, आप लोग एक बार अगर जाके चेक करें मेरे description box, you'll find the link and you can download this. ये नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिएगा and check the entire syllabus. Okay, I'm not going in detail. मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं पूरे डिटेल में तो नहीं जा सकता, it will take a long time otherwise, ठीक है ना। तो मैं जल्दी से जो है ऊपर उठ जाता हूँ और मैं आपको नोटिस पे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। ये बहुत ही ज्यादा लंबा सिलेबस है। ओके हियर, तो ये जो नोटिस है इसका मैंने लिंक ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आई हैव गिवन द लिंक in the description box also. This notification I have given in the description box. You can straightly go there and download. You'll find the third link, www.mbose.in. So mbose.in, ये जो लिंक है I have given in the description box. You can straightly go there and download the pattern, and please inform all your students. I would suggest all of you kindly, if possible, share this video. ये जो वीडियो जब खत्म होगा, when the video will end, please share the link with your friends also, okay, so that they can get the information and inquire from their respective teachers. You can also inquire from your respective teachers, okay. So that is all, okay. If there is any question from your side, you can ask me. I'm going to end in the next 5 minutes. मैं अगले 5 मिनट में मैं ये स्ट्रीमिंग एंड कर दूंगा। तो if there is any question from your side, you are very free to ask. अगर आप कोई क्वेश्चन मुझे पूछना चाहे तो, सर can you tell from which additional English chapters from additional English carries higher scoring marks? Yes, in vain I can tell you that, and I can make a separate video on that. I think we get PYQ from an online platform, but we have to prepare from starting only language subject because my state already followed NCERT. Very good, Denver. That is a very good thing that your state has done. Actually, no previous question, no copy note from past pupils means loss for students. It is not exactly loss, but then students will need to work very hard. Those students who are actually going to follow the syllabus, the pattern of question, the textbook for the first time. Second time students, that is 2025 batch, will be in a little relaxed mode because they will get ready-made notes from the seniors, but not 2024 students. For 2024 students, everything is going to be new. Then in rural areas, they used to provide books from SSA. Yes, SSA. Let me tell you now. There is a particular thing from class 1 to class 8 only. SSA provides book, not for 9 and 10. 9 और 10 के लिए SSA बुक्स प्रोवाइड नहीं करता है, क्लास 1 से लेके 8 तक ही है। दिस प्रोविजन इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 8 अंडर द SSA, समग्र शिक्षा अभियान। ऑलराइट, 9 to 12 does not come under SSA actually.
But anyways, if government feels they can provide free textbooks, and that will be a very good initiative, a very good move from the students. But anyways, if the cost of the books will be less, अगर किताबों का दाम बहुत कम रहा तो students can anyways afford, right? Students can anyway afford. Right now I think your English book costs 140 to 150 rupees. मुझे exactly नहीं पता. Right now I do not know what is the price, but I think 140 to 150 rupees it costs. So when NCERT textbook comes, it will come down. लेकिन इंग्लिश के बारे में मुझे नहीं लगता है टेक्स्ट बुक चेंज हुआ होगा. The textbooks that I showed you right now, you please download this. ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिए मेरे लिंक से. Please download from my link. Okay, it is given in the MBOSE website. You can simply click on my link and directly you will be able to download this page. Third link. Alright. NCERT books follow in-depth knowledge. Yes, Denver, that is correct. Absolutely correct. Sir, can you please explain us history chapter 1? Mighty Vlogger Shillong, actually I have not touched any other subject yet. मैंने कहा था कि SST में स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाया because I'm focusing more on English. एक बार जब मैं क्लास 9 and 10 English, additional English, I've completed everything. Only class 11 and 12 is left. अगर मैं 11 और 12 का इंग्लिश का सिलेबस खत्म कर लूँ एक बार, then I will be able to touch other subjects also. And my first target is SST. मेरा first target after English, completion of the English syllabus for class 11 and 12 will be SST. Nihal Devroy, are these books free? No, these books, as far as my knowledge and experience and my information is concerned, from class 1 to 8 only the books are free. 9 to 12 it is not free because 1 to 8 comes under SSA, Samagra Shiksha Abhiyan. Okay, like in my school also, we provide free textbooks that comes from the SSA office. That is only meant for class 1 to class 8. Agar class 9 to 12, because it is written on the books for free distribution. किताबों के ऊपर लिखा रहता है for free distribution. तो on those books जहाँ लिखा रहता है on for free distribution, we provide free textbooks only in those classes. ठीक है, तो क्लास 1 से लेके 8 तक ही जो है 6 से लेके 14 साल के बच्चे ही फ्री शिप के अंदर आते हैं, फ्री टेक्स्ट बुक्स, but only if the free textbooks are provided by the government. Okay, please do not blame the school that schools are not providing free textbooks. If it comes from the government only, then अगर ये गवर्नमेंट से आता है तभी जो है मिलता है. ठीक है, तो मैंने देखा है बहुत सारे स्कूल से जहाँ बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 8. तो जनरली क्लास 1 से लेकर क्लास 8 के स्टूडेंट ही इसी एज ग्रुप में आते हैं, 6 to 14 के एज ग्रुप में. Provide a revision session for English grammar for upcoming SSLC. Definitely, Denver, I was planning actually a grammar marathon. Denver, I was actually planning for a grammar marathon. मैं एक लाइव ग्रामर मैराथन प्लानिंग कर रहा था इन द मंथ ऑफ जनवरी एक्चुअली, कि मैं एक ग्रामर मैराथन लाऊं और सारे चैप्टर्स जो हैं ग्रामर के जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑल चैप्टर्स फ्रॉम द ग्रामर आई वुड कवर अप, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स and explain you. All right, okay, so if there are no more questions from your side, then I would like to end the live streaming. अगर कोई क्वेश्चंस आपकी तरफ से नहीं है तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग एंड करना चाहूंगा. और जो भी बातें आप लोगों ने कहा यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग पे, ऑल योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस, योर रिक्वेस्ट्स, आई विल डेफिनेटली फॉलो. ओके, लाइक important questions, important lessons for SSLC in 2024 March SSLC board exams. I'm definitely going to make for class 11 and 12 also. I'll be making. Okay, मैं उनके ऊपर भी बनाऊंगा. मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड ही कर देता हूँ एक बार, ताकि आप सब लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिले इसका. जो भी रिक्वेस्ट आपने किया, इम्पोर्टेंट लेसन्स, ओके, इम्पोर्टेंट लेसन्स मैं प्रोवाइड करूंगा. लेसन्स for SSLC, both SSLC and HSSLC for 2024 board exams. Then important questions भी मैं प्रोवाइड करूंगा for both SSLC and HSSLC class 10 and class 12 for 2024 मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, फिर स्ट्रीम्स को लेके थोड़ा सा आप सब लोगों में थोड़ा सा ये है, मैंने एक वीडियो बनाया स्ट्रीम्स के ऊपर. I'll be putting on the end screen. ये मैं end screen में डाल दूंगा.
एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, एंड हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स और हाउ टू बिकम अ टॉपर ये भी मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा. हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, दिस ऑल्सो आई विल पुट इन द एंड स्क्रीन. ये भी मैं एंड स्क्रीन में देख लूंगा. आप लोग ये वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, प्लीज सी दिस वीडियो. यस आई विल प्रोवाइड यू एज फास्ट एज पॉसिबल, डू नॉट वरी. ओके, ये भी मैं डाल दूंगा वहां पे, ठीक है. एंड इन विच स्कूल यू शुड टेक एडमिशन. ऑलराइट, in which school you should take admission. I remember all your points. I'll be putting up this also. Okay, so finally I think I will be ending the video. All of you will have your dinner right now, right? Have a good dinner, sleep well, and I'll be coming with plenty of good videos for all of you. Okay, so finally the same request that I make everybody, please, first of all, please share this video with your friends. Please share the link, this particular video. ये जो वीडियो है, will मेघालय adopt NCERT textbooks, ये लिंक आप अपने दोस्तों से प्लीज शेयर कीजिए, उनको ये नॉलेज दीजिएगा, ठीक है. एंड फाइनली, those who have not subscribed, please subscribe to the channel, like and share my videos, because with your love only I get motivated. मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड होता हूँ. आप सब लोगों से इतना ज़्यादा प्यार मिलता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता हूँ. और this motivation helps me in making more explanations. Okay, I'll be coming up with some more explanations. All right, so that's all from me for today. I'm ending the live streaming right here, right now. A very good night to all of you, and thank you so much for being live there on my channel and watching the video with love from Omni Gyan. And all the very best to all of you. Have a good night.